Hello everyone, welcome to GATE-NET-CS classes. So today we are going to discuss some of the MCQs which are previous year questions related to our subject, that is research aptitude, which is second unit under your paper 1 for your UGC NET exam. Okay, so let us start with our discussion. The important points and the important things we need to learn about the questions, we will discuss those things also along with the question. Okay, so let us consider our first question. So here I have given some links like my WhatsApp group link and Telegram group link if you people want to connect with me, so that you people can get the notifications time to time. Okay, I regularly post some videos over there, so you can be in touch with me. And this is my YouTube channel link, and the channel name is GATE-NET-CS classes. Fine. So let us discuss our first question, that is a questionnaire that offers no scope for any respondent's own view is. Now, in this question, they are asking if we are given one questionnaire and respondent is not allowed to give his own views, his perceptions according to him or her, that is not possible. In which of the following options? So, different options are given over here: closed-ended, schedule, open-ended, unstructured. Fine. So, these are the four options given over here. So, what would be the correct answer for this question? So the correct answer is closed-ended. Okay, closed-ended means that if we are given two options like yes and no, okay, this is the survey form given to the person, and here the respondent has to put only yes as an answer or only no as an answer. Okay, these two options are only available to him, and from these two options only he or she has to give the answer. Okay, he is not having the option that he can fill the long lines over here. That option is not provided over here, so that is called as closed ended. Fine. Next is schedule. Schedule means that simply any kind of schedule we are providing. ठीक है, तो नेक्स्ट होता है हमारे पास ओपन एंडेड. ओपन एंडेड मीन्स दैट व्हेन वी आर हैविंग multiple options, like we are given a large space. Okay, in the large space you can provide your answer. आप अपना लंबा चौड़ा आंसर यहाँ पे you can write over here, that is your open ended. Fine. Next is your unstructured. Unstructured means that कुछ भी जो कि structured नहीं है. तो वैसे भी अगर हम लोग by option cover करने की कोशिश करते हैं, we are only confused with these two options, that is closed ended and open ended. Fine. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सो क्लोज्ड एंडेड मीन्स दैट those kind of questions where you are having only selected options. Okay, limited number of options are provided to you, and from those limited number of options, या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं yes no की फॉर्म में, और any kind of rating scale is provided to you, एंड उस रेटिंग स्केल में से आपको सेलेक्ट करना है कोई भी आंसर, लाइक स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री. फाइन. सो गिवन ऑप्शन में से ही यू हैव टू चूज फॉर वन आंसर, दैट इज योर क्लोज्ड एंडेड. इफ यू टॉक अबाउट द ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ yes and no, okay, you can have your perfect answer in the long lines. Okay, the longer response कैन बी प्रोवाइडेड बाय यू. ओके, जो रिस्पॉन्डेंट होगा वो क्या करेगा, जितनी भी उसको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो वहां पे प्रोवाइड कर सकता है. दैट इज योर ओपन एंडेड क्वेश्चन. एंड यहाँ पे क्या होता है, द परसेप्शन इज ऑल्सो देयर. जितने भी पर्सन उसका आंसर देंगे, एवरीवन विल हैव हिज और हर own perception. Okay, everybody can have the different answer for the same question. So that is your open ended. क्लोज एंडेड में क्या होता है, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है. राइट. So here I have taken the example also. Closed ended means that the two options are provided. From the two options you have to choose for any of the one, right? And in case of open ended क्या होगा, there is a text box they are providing to you, and you have to give your answer, you have to type your answer over here, right? That is your open ended. Fine. I hope this question is clear now. So the second question is your
in experimental based research. Okay, so we are having different types of research. Fine. So experimental based research is one of the research जहाँ पे हमारे पास we deal with cause and effect. Okay, cause and effect से deal करते हैं हम लोग यहाँ पे. So the question is, in experimental based research studies, the observations derived from ऑब्जर्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, किस वेरिएबल से जो है आपको मतलब ऑब्जर्वेशन को आप लोग पढ़ते हैं. ठीक है, किस तरह से डिराइव करते हैं अपनी एनालिसिस के लिए फॉर द फर्दर एनालिसिस. राइट. सो वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल. सो दीज आर द फोर ऑप्शंस. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स दैट द वेरिएबल विच इज डिपेंडेंट ऑन other factors. Okay, that is dependent on other factors. Like us, if we eat food, then only we will be able to live, right? So we are dependent on food, we are dependent on water. So we are what? We are dependent variable, and depending upon the dependent variable only we can do some analysis. Okay, किसी भी तरह का observation और analysis को understand करना है, then you have to consider about the dependent variable. Fine. So let us discuss these all four kind of variables. The first one is your independent variable. ठीक है, as I have said, it is the experimental research किस पे बेस करता है हमारे पास cause and effect पे. ठीक है, experimental research it is based on कॉज एंड इफेक्ट. तो जो कॉज होता है इट इज कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इफेक्ट किस पे पड़ता है? द इफेक्ट इज अप्लाइड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, वी डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन. राइट. सो इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट फॉर अदर वेरिएबल्स and here it value changes. Okay, it changes depending upon your independent variable. If you do any kind of modification on the independent variable, then its effect will be on your dependent variable. Right. So जो second third category दी हुई थी, it was your mediating variable. ठीक है, mediating variable. Now we have to understand what is mediating variable. This mediating variable is also called as mediator. ठीक है, ये explain करता है the process थ्रू विच, जिसके थ्रू टू वेरिएबल्स जो हैं रिलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, रिलेट करते हैं मतलब. राइट. जो कि हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है. अब वो क्या होता है? दीज आर टू थिंग्स. ओके, इट इज योर mediating variable, this is your mediate moderating variable. So these are two different type of variables. Moderating variable is also called as your moderator also. So these two things you have to remember. Okay, one is your mediating variable, which is also called as mediator. It explains the process through which two variables are related. Fine. अब आता है next while. एक जो moderating variable होता है, it is also called as moderator, जो कि effect करता है any kind of strength and direction of that relationship. ठीक है, तो पहले ये वाला वेरिएबल होगा mediating variable, then we will have this moderating variable that will affect the strength of this particular relation. Okay, of that relation, the previous relation. Okay, so this is your mediating variable and moderating variable. Next, the fourth option it was given, that is your control variable. अब control variable क्या होता है? It is anything that is held constant. Okay, that is held constant, या फिर आप बोल सकते हो it is kept on in a limited way. Okay, limited access in a research study. It is that variable that is not of interest to the study ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ वेरिएबल है, बट ये किस लिए होता है? जो कि कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, बिकॉज इट कुड इन्फ्लुएंस द आउटकम, इसलिए हम इसे थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं. जितना आप इसमें चेंजेस लेकर आएंगे उतना जो है हमारे आउटकम, जो हमारा रिजल्ट होगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा. सो दिस इज द कंट्रोल वेरिएबल जिसपे आपको कंट्रोल रखना है, सो दैट द डिजायर्ड आउटपुट कैन कम टू यू. ओके, सो दैट इज योर कंट्रोल वेरिएबल.
Done. So here we can study some of the control variables जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो वी कैन टेक द एग्जांपल ओवर हियर. Independent variable, like if we take light and color, so these two things are independent variables. Let us consider an example. Okay, अब जितनी हम लोग लाइट देंगे, ठीक है, जितनी हम लोग लाइट देंगे, क्या होगा, प्लांट की जो हाइट है उस हिसाब से होगी, राइट. सो दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइट इज इफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल प्लांट्स हाइट. ओके, प्लांट्स की हाइट. Then what are the control variables over here? जितना पानी देना है, the water you will give, the soil you are using, the temperature, the day and the night time. ठीक है, so these are the control factors. So these are your control variables. It is your independent variable and this is your dependent variable. ठीक है, ये इकट्ठा है, it is your light color. So these are some kind of variables. ठीक है, जो कि variables की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास. तो ये एक तरह की स्टडी है. इट इज एन एक्सपेरिमेंट. ओके, वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ओवर हियर. कॉज एंड इफेक्ट आप लोग कंसीडर कर सकते हैं. देन यू कैन कंसीडर अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आल्सो ओवर हियर. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स दैट वेरिएबल दैट इज चेंज्ड. ओके, और अगर इसमें चेंज आप लोग करेंगे तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? The effect will come to your dependent variable. Okay, it will get affected, variable affected by the change. So the example over here in the independent variable is amount of water, and in case of dependent variable we are having the size of plant. ठीक है, it can vary, depends upon your amount of water you are providing to it, the number of leaves it is having. Fine, ज्यादा पानी दे रहे हैं, कम पानी दे रहे हैं, according to the requirement. Then it is living है या dead है, it is also depending upon your amount of water. If you won't give water, then it will cause a plant to be dead. Okay, so it was your second question. तो third question आता है हमारे पास, which of the following research type has a potential for enhancing the teaching competencies. अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च दी हुई है, ठीक है. तो फ्रॉम दीज ऑप्शंस यू हैव टू गिव द आंसर कि विच ऑफ द रिसर्च टाइप हैज द पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग योर टीचिंग कॉम्पिटेंसी. अब टीचिंग कॉम्पिटेंसी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन सा रिसर्च जो है वो हेल्पफुल रहेगा? फंडामेंटल, अप्लाइड या इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च या फिर योर एक्शन रिसर्च. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च जो है वो हमारे पास यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी, जो भी चीजें हमने बना करके देखनी है. ठीक है, अब एक्शन रिसर्च में क्या होता है? द कंप्लीट प्रोसेस इट इज हैविंग. लेट अस कंसीडर द एक्शन रिसर्च फर्स्ट so that we can understand how it is helping in your teaching competency. एक्शन रिसर्च एक रिसर्च मेथड है, ठीक है, जहां पे आप इट एम्स टू साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट. आप you do research. Okay, आप research करते रहते हैं, you investigate on something and solve an issue. Okay, and finally you will solve the issue. In other words, as the name suggests, action research conducts the research that takes an action at a time. ठीक है, as its name represents, here we are taking some kind of action depending upon our research or investigation. ठीक है, जो भी हम रिसर्च करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक्शन होगा, तो इस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेगी, वो होता है हमारे पास एक्शन रिसर्च. तो ये इस तरह का जो है इसका साइकिल है. तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है साइकिल के बारे में, देन इट इज द आंसर. ठीक है, एक्शन रिसर्च में वी आर हैविंग साइकिल. तो साइकिल में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, लाइक प्लानिंग, एक्टिंग होगी, ठीक है, देन ऑब्जर्व करना चीजों को, फिर जो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, एनालिसिस की होंगी, रिपोर्ट बनाई होंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने उन चीजों को रिफ्लेक्ट करना है. ठीक है, चेंजेस कर देनी है. अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक है, तो आप चेंज कर दो वे ऑफ टीचिंग. यू कैन चेंज द वे ऑफ टीचिंग. ओके, देन अल्टीमेटली
आप क्या करेंगे, इससे आप में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है, आप इवेलुएट करके देखेंगे एंड देयर विल बी सम इंप्रूवमेंट। एंड फर्दर इफ यू नीड अगेन, आप साइकिल चला करके मोर इंप्रूवमेंट्स जो है आप लोग कर सकते हैं, बार बार वही चीजों को परफॉर्म करके ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक्शन रिसर्च होता है। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम लोग सिर्फ रिसर्च करते हैं, ठीक है। हम किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं और उसके बारे में नॉलेज गेट कर लेते हैं, इतनी ज्यादा नॉलेज गेट कर लेते हैं कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर थिंग पे वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, दैट इज योर फंडामेंटल रिसर्च, ओके। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज it does not usually generate findings that have immediate applications in practical level। तो practical level में इसका कुछ भी implementation immediately नहीं होगा, ठीक है, immediately नहीं होगा, later on हो सकता है, it depends, right। so next is your applied research। applied research होगा जब वो practical solutions के लिए use किया जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाएगा। इट इज दैट काइंड ऑफ रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो होता है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा चीजों को कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है, तब जा करके हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू टेक्निक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये क्या है इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक इवेल्युएशन की ही कैटेगरी है, ठीक है, इवेल्युएशन की ही कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम लोग न्यू रूल्स वगैरह, न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स कर सकते हैं, सो दैट हमें जो है मोर बेनिफिट हो, ठीक है, मोर बेनिफिट हो। सो इट इज अ काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव एनालिसिस ओनली, अ इवेल्युएशन, ठीक है। तो हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास ये था, एक्शन रिसर्च, राइट। Let us consider the next question। सो मैं यहाँ से आपके साथ फर्दर कुछ वीडियोस में रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन से फर्दर एक दो मैं रिकॉर्डिंग्स करके पार्ट्स बना लेंगे। तो अभी हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो इट वाज योर पार्ट 1, ओके। तो हम लोग लेटर ऑन जो है पार्ट 2 भी रिकॉर्ड करके आपको सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।